Assalamu alaikum class. So today we are going to discuss chapter 8, air and air pollution. Long distance transport of air pollution. Persistent toxic compounds are found in the Yukon in northwestern Canada and in other pristine Arctic regions, far from where they were originally produced. This occurs through the global distribution effect. In which chemicals enter the atmosphere in warm regions and move to areas of higher, cooler latitudes, where they are deposited on the surface. The chemicals are then available to be absorbed, inhaled, or ingested by organisms at these distinct or distant locations. Chemicals concentrate in the body fat of animals at the top of food chains, including humans. When an, ins- when an Inuit woman consumes a single bite of raw whale skin, she ingests more toxic PCBs than scientists think should be consumed in a week. 5 times as much PCB is found in the breast milk of infant of Inuit women than in the milk of women who live in southern Canada. Persistent organic pesticides also concentrate in the milk of polar bear mothers. Atmospheric conditions also cause pollutants from Asia to move east across the Pacific Ocean. In 1998, a Chinese dust storm produced a visible cloud of particulate matter that transferred toxic metals from smelters into Manchuria to the United States. Around the world, the air we breathe can be contaminated with a variety of pollutants because air pollution causes many health and environmental problems. Most highly developed nations and many developing nations have policies and regulations limiting emissions from transportation, industry, and even households. Okay, over here in this figure, you can see the concentration of persistent organic pesticides in polar bears' mother's milk based on samples from female polar bears in Hudson Bay, Canada. So you can see DDTs are present, HCS are present, chloric benzene, chlordenines, and PCBs in very high concentrations. Moving on, let's start with the atmosphere because we're discussing air and air pollution. So it all happens in the Earth's atmosphere. So if you see over here in this picture as well, the atmosphere figures 8.2, the atmosphere of the Earth is just like the skin of the apple. It's just that thin. It's very thin comparatively compared to the Earth. Overall, it stretches kilometers into the Earth, and it can even go from as far away as the moon is to as far away as the as Mars, depending on the scientists you talk to. Now, this atmosphere, this thin blue line, the thin blue layer that separates the planet from the blackness of the space, it is majorly comprised of oxygen and nitrogen. ये predominant gases हैं, and they account for almost 99% of the dry air. The rest of the gases, they make up 1%. In addition, water vapor, इसके अलावा जो चीज होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर है, the most variable gas in the atmosphere, and trace amounts of air pollutants are present in the air. और एटमॉस्फेयर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ और एटमॉस्फेयर की वीडियो में भी डिस्कस हुआ होगा, that it becomes less dense as it extends outwards into space.
Okay, so what is the atmosphere? The gaseous envelope surrounding earth is our atmosphere. अब atmosphere की composition जो मैं already आपसे discuss कर चुका हूँ. So nitrogen and oxygen major form जो है ना portion जो बनाते हैं atmosphere का. Nitrogen is roughly 78%, oxygen is 21%. इसके अलावा बाकी थोड़ी थोड़ी गैसेज हैं, जैसे कि आर्गोन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, और अदर गैसेस हैं 0.03%. अब इसके अलावा फिर इसके अंदर वाटर वेपर आ जाता है, वेरियस पॉल्यूटेंट्स इसके अंदर, मीथेन, ओजोन, डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये भी इस एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाते हैं. अब एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट एंड व्हाई इज इट इज सच अ टॉपिक ऑफ फोकस. The atmosphere performs several valuable ecosystem services. First, it protects the Earth's surface from most of the sun's ultraviolet radiation and X-rays, and from lethal exposure to cosmic rays from space. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है कि ये सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है, रेडिएशन, एक्सरेज से, और लीथल जो एक्सपोजर होगा हमें कॉस्मिक रेज से फ्रॉम द स्पेस, उससे भी बचाता है ये एटमॉस्फेयर. लाइफ एज वी नो इट कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट दिस शील्डिंग. तो अगर लाइफ खत्म हो जाती है अगर ये शील्डिंग ना होती, तो एक्सरेज और इस कॉस्मिक रेज और यूवी रेज की वजह से ही सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई होती, उसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाती, तो सारी लाइफ डेड हो जाती. और जो दूसरा इसका बेनिफिट है वो है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब some of the heat radiated from Earth's surface, which keeps the lower atmosphere within the range of temperatures that supports life. तो ये कुछ हीट जो अर्थ की सरफेस से उसको कीप कर रही होती है, उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है. Okay, let's move on to environmental insight. The atmosphere, figure 8.3. You can see atmosphere has several different layers. You can see them over here. The first layer where we live is the troposphere. ओके, यहाँ पर एवरेज जो थिकनेस है, इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो तकरीबन 12 किलोमीटर है थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट चेंजेस बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये 16 किलोमीटर इतने माइल्स थिक है एट द इक्वेटर, और 8 किलोमीटर तकरीबन 5 माइल्स थिक है एट द पोल्स. फाइन. Layer of atmosphere closest to the Earth's surface temperature decreases with increasing altitude. दिस इज द फर्स्ट लेयर जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है, जो सरफेस को टच करती है, जिसके अंदर हम रहते हैं. टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड के. जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, हम पहाड़ों के ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा. इसके अलावा यहाँ पर हमारा मेजर वेदर भी हो रहा होता है, जिसके अंदर टर्बुलेंट विंड्स हो गई, स्टॉर्म्स हो गई. मोस्ट क्लाउड्स जो है वो इसी लेयर के अंदर होते हैं. ठीक है. इसके बाद जो इसके ऊपर की लेयर है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है. स्ट्रेटोस्फेयर तकरीबन 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है. इसके अंदर स्टेडी विंड्स होती हैं बट नॉट टर्बुलेंट. ठीक है. इसके अंदर टर्बुलेंस नहीं होती, स्टेडी विंड्स चल रही होती हैं. कमर्शियल जेट्स फ्लाई हेयर. ठीक है ना, इस लेयर के ऊपर कमर्शियल जेट्स फ्लाई कर रहे होते हैं. contains a layer of ozone that absorbs much of the sun's damaging ultraviolet radiation. इस लेयर के अंदर एक ओजोन की लेयर है जहां पर सन की ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. अब ये ओजोन लेयर इस तरह की एक पतली सी थिन शीट नहीं है, ये 3-4 किलोमीटर बड़ी थिक सी एक लेयर है ओजोन की. ओजोन भी बेसिकली O3 ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन है वो इस लेयर के अंदर होती है, जो कि यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और अंदर नहीं आ देती, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है. Temperature increases with increasing altitude because absorption of UV radiation by ozone layer heats the air. तो जैसे कि जैसे इसके अंदर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बिकॉज ओजोन जब एब्जॉर्ब करती है इसको यूवी रेडिएशन को, तो वो उसकी वजह से ऊपर की एयर जो है वो हॉट होती जाती है. मूविंग फॉरवर्ड, देन कम्स इन द मेसोस्फेयर. ठीक है. इट एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. It is directly above the stratosphere. Temperatures drop to the lowest in the atmosphere as low as minus 138 degrees Celsius.
तो ये वो एरिया है जहां पर जो तकरीबन टेम्परेचर जो है वो -138 डिग्री सेल्सियस तक है। तकरीबन कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर है वो यहाँ पर नोटिस किया जाता है। और मीटियोर्स जो है वो ऑफन बर्न अप फ्रॉम फ्रिक्शन विद एयर मॉलिक्यूल्स इन दी मीसोस्फेयर। तो मीटियोर्स जो होते हैं जो कि अर्थ के ऊपर गिरते हैं वो इस मीसोस्फेयर के अंदर एंटर होते ही एयर फ्रिक्शन की वजह से तकरीबन ज्यादातर बर्न हो जाते हैं और बहुत कम ही होते हैं जो सरफेस पे पहुंचते हैं। एंड देन द लेयर, इसके अंदर थर्मोस्फेयर आ जाता है जो द फाइनल लेयर है। इसको हम कहते हैं कि ये एक्सटेंड करती है तकरीबन 480 किलोमीटर, लेकिन again इसके बारे में डिफरेंट राय है डिफरेंट साइंटिस्ट की। लेकिन 480 किलोमीटर तक ये तकरीबन एक्सटेंड करती है ये लेयर है। जो गैसेस हैं इन एक्सट्रीमली थिन एयर, ठीक है, जो इसके अंदर तकरीबन बहुत कम एयर होती है, ज्यादातर ये हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह की एयर होगी। इट एब्जॉर्ब्स एक्स-रेज एंड शॉर्ट वेव रेडिएशन जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही होती है, रेजिंग द टेम्परेचर टू 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर। तो यहाँ पर टेम्परेचर वापस राइज करके तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। द एटमॉस्फेयर इज इम्पोर्टेंट इन लॉन्ग thermosphere is important in long distance communication because it reflects outgoing radio waves back to earth without the use of satellites। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो मेजर बेनिफिट है वो कि यहाँ पर से ये आपकी जो आउटगोइंग रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके अर्थ के ऊपर वापस आ जाती हैं विदाउट द यूज ऑफ सैटेलाइट्स, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कम्युनिकेशंस। एरोरास जो है वो यूजुअली इसी लैटिट्यूड के ऊपर, इसी थर्मोस्फेयर के अंदर अकर कर रहे होते हैं, वो जो लाइट शोज मैंने आपको डिस्कस किए थे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट बी के अंदर, अ थंडरस्टॉर्म इन मेक्सिको, न्यू मेक्सिको, ड्यूरिंग द a lightning flash, a negative charge moves from the bottom of the clouds to the ground, followed by an upward moving charge along the same channel. The expansion of air around the lightning strike produces sound waves or thunder. You can see it right here. And this is rain. An aurora in the northern hemisphere. You can see this is the aurora borealis जो मैंने आपको डिस्कस की थी। Electrically charged particles from the sun collide with the gases molecules in the thermosphere, releasing energy visible as light of different colors. अब एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताते जाऊं कि ये जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन सब का टेम्परेचर जो है वो रेडिकली डिफरेंट होगा। इसलिए ये जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है ये ना डेंसिटी की बेस के ऊपर है ना किसी और चीज की बेस के ऊपर बनी हुई है। ये लेयर्स डिफाइन की जाती हैं बाय द रेडिकल चेंज इन टेम्परेचर। तो एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते ही आपका जो टेम्परेचर रेंज है वो सडनली चेंज हो जाएगी, अचानक से बिल्कुल डिफरेंट रेंज आ जाएगी। दैट इज वाई these layers are identified as this way, कि यहाँ पर टेम्परेचर जो रेडिकली चेंज हो, जैसे कि यहाँ से जब यहाँ से जाता है ऊपर की तरफ तो सडनली कोल्ड हो जाता है, और यहाँ से जब और ऊपर जाता है तो सडनली हॉट हो जाता है। Now moving on to the atmospheric circulation, the amount of solar energy that reaches different areas on Earth varies over the course of the year and from places to places around the globe. This variation creates differences in temperature, which then derive the circulation of the atmosphere. The very warm regions near the equator heat the air, which expands and rises. As this warm air rises, it cools, spreads, and then sinks again. Much of it circulates almost immediately to the same area it has left. The remainder of the heated air splits and follows towards the poles. The air chills enough to sink to the surface at about 30 degrees north and south latitudes. This decreasing air, descending air splits and follows over the surface. Similar upward movement of warm air and its surface quarter follows towards the pole also occurs at higher latitudes further from the equator. At the poles, the air cools, sinks, and flows back towards the equator, generally beneath the currents of warm air that simulate flow towards the poles.
These constantly moving currents toward transfer heat from the equator towards the poles and cools the land over which they pass on their return. This continuous circulation moderates temperature on Earth's surface. ये आपको यहाँ इस फिगर के अंदर नजर आएगा और ये आपके एक्चुअली बीबीसी अर्थ ऑर्बिट की वीडियो के अंदर ये पूरे सर्कुलेशन सेल्स डिस्कस हुए थे. So atmospheric circulation and heat exchange figures 8.4. In the atmospheric convection, heating of the ground surface heats the air, producing an updraft of less dense warm air. The convection process ultimately causes air currents that mix warmer and cooler parts of the atmosphere. सनलाइट पड़ती है लैंड के ऊपर, लैंड गर्म होता है, उससे वार्म एयर गर्म होती है, जो राइज होती है, जिसकी वजह से जो समंदर से आती है ठंडी हवा होती है वो भी राइज होती है, और वो एज अ रिजल्ट बारिश का रिजल्ट करती है, और एज इट इज एयर जो है वो भी गर्म होके ठंडी होके वापस सर्कुलेट होती रहती है. इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कॉन्स्टेंटली एयर एक इक्विलिब्रियम को फाइंड करने की कोशिश कर रही होती है कॉन्स्टेंटली. अब ये जितने डिफरेंट एरियाज हैं ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी अर्थ की ये जो डायग्राम है ये सर्कुलेशन सेल्स की, कि यहाँ से एयर उठती है, ये गर्म होती है, फिर यहाँ ठंडी होती है, थोड़ी यहीं पर गिर जाती है, बाकी की यहाँ से मूव करते हुए यूं गोल घूम के वापस उस पॉइंट पे आ जाती है. इस तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में ये उल्टा जाता है. इस तरह से ही ये डिफरेंट सेल्स हैं जो चल रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली. और ये जो हॉट एरियाज है यहाँ पर तकरीबन यूजुअली रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जो कोल्डर एरियाज हैं वहां पर यूजुअली डेजर्ट्स पाए जाते हैं एट दीज लैटिट्यूड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और यही ट्रेड विंड्स को डिक्टेट करते हैं. फॉर एग्जांपल इस एरिया में ट्रेड विंड्स इस तरफ जाती हैं, इस एरिया में इस तरफ जा रही होती हैं, इस तरह से ये इधर जाती हैं, ये इस तरफ आती हैं. ये सारा कुछ आपको बीबीसी ऑर्बिट के अंदर बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया, अगर आप सबने वो देखी हो. उससे रिलेटेड क्विज मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा आप सबके लिए. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट्स हीट फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स. जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर, द ग्रेटेस्ट सोलर एनर्जी इनपुट अकर्स एट द इक्वेटर. डेफिनेटली इक्वेटर के पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी आउटपुट आती है. इस वजह से हीटेड एयर मोस्ट स्ट्रांगली इन दैट एरिया, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है हीटेड एयर, और वो सडनली आगे की तरफ जाकर कूल होती रहती है. The air rises, travels towards the poles, and cools in the process, so that much of it descends again at around 30 degrees latitude in both hemispheres. At higher latitudes, the pattern of air circulation are more complex. So, इसके अंदर बेसिकली अर्थ के जो रोटेशन है उसका बहुत बड़ा फैक्टर है. इसी वजह से कोरियोलस इफेक्ट जो है वो इसको इफेक्ट कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली. Number C, spring sandstorm in China. This NASA satellite image shows a massive sandstorm in China. The sand passes over Japan a few days later. हाँ, Coriolis effect भी आ गया. Figure 8.5. Viewed from the North Pole, the Coriolis effect appears to deflect ocean currents and winds to the right. From the South Pole, the deflection appears to be the left. ठीक है, नॉर्थ से राइट की तरफ मूव होती है, और जो साउथ पोल है वहां से लेफ्ट की तरफ. रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स न्यूयॉर्क अलोंग 74 डिग्रीज लैटिट्यूड. जब उसको स्ट्रेट लॉन्च किया गया टू न्यूयॉर्क, तो वो कोरियोलस इफेक्ट की वजह से बेंड होकर न्यूयॉर्क की जगह मिडल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच जाएगा. ठीक है. सो नोटिस द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन, के अर्थ की रोटेशन क्योंकि उस तरफ को हो रही है कॉन्स्टेंटली. अर्थ कॉन्स्टेंटली इस तरफ को रोटेट कर रही है, राइट की तरफ को. इस वजह से वो जो रॉकेट है वो मूव कर जाता है, डाइवर्ट कर जाता है अपने पाथ से. As the rocket travels to New York, Earth's rotation causes the rocket to head west of its intended flight path. और इसकी वजह से वो न्यूयॉर्क की जगह किसी वेस्ट पॉइंट के ऊपर जो मिडल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पर पहुंचेगा. Similarly, a rocket launched from the South Pole towards New York would head west of its intended flight path. कि जो साउथ से आ रहा है वो भी वेस्ट की तरफ को मुड़ जाएगा, क्योंकि अर्थ की रोटेशन उस तरफ को हो जा रही है जो है ईस्ट की तरफ को. दिस इज कॉल्ड द कोरियोलस इफेक्ट. अब जाना मैं आपको ये दिखा भी दूं,
बेसिकली इसने जाना था इस बात के ऊपर यहाँ तक, जबकि ये जा यहाँ पर है। इसी तरह से साउथ से इसने यहाँ पर जाना था, जबकि ये जा यहाँ पर रहा है। In addition to these global circulation patterns, the atmosphere features similar scale horizontal movements or winds. The movement of wind with its edible lows and turbulent gusts is difficult to predict. ओके, कोरियोलिस इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन में एक बार आपको बताता हूँ। द टेंडेंसी ऑफ मूविंग एयर और वाटर टू बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ एंड swerve to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. The atmosphere has three prevailing winds: major surface winds that blow more or less continuously. तो कॉन्स्टेंटली सरफेस की विंड्स होती हैं जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे कॉमन प्रेवलेंट विंड्स हैं, उसमें से सरफेस विंड्स हैं जो कॉन्स्टेंटली जो चलती रहती हैं, ठीक है ना। Prevailing winds from the northeast near the north pole or from the southeast near the south pole are called polar easterlies. Winds that blow in the middle latitudes from the southwestern, the northern hemisphere, or from the northwest in the southern hemisphere are called westerlies. Tropical winds from the northeast in the northern hemisphere or from the southeast in the southern hemisphere are called the trade winds. ये सब आपने यहाँ पर देख ली, ट्रेड विंड्स भी आपके सामने ये आ गई हैं। ये पोलर ईस्टीज आ गई, ये वेस्टर्लीज आ गई, और ये ट्रेड विंड्स आ गई। नाउ द टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हमने क्योंकि सारा एटमॉस्फेयर डिस्कस कर लिया, अब इसकी टाइप्स और सोर्सेज एयर पोल्यूशन की डिस्कस कर लेते हैं। Air pollution comes from natural sources such as smoke from a forest fire ignited by lightning or gases from an erupting volcano. However, human activities release many kinds of substances into the atmosphere and contribute greatly to global air pollution. Some of these substances are harmful when they are inhaled or settle on land and surfaces, waters, and some substances are harmful because they alter the chemistry of the atmosphere. So, for example, air pollution. अब क्या है इसकी definition? Various chemicals, gases, liquids, or solids present in the atmosphere in high enough levels to harm humans, other organisms, or materials. Then comes in the primary air pollutants and secondary air pollutants. Primary air pollutants कौन से हैं? The harmful chemicals that enter directly into the atmosphere due to either human activities or natural processes, जो directly उसके अंदर atmosphere में पहुंच जाते हैं। जबकि secondary air pollutants क्या हैं? Harmful chemicals that form in the atmosphere when primary air pollutants react chemically with one another और विद नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये जो सेकेंडरी है ये वो होते हैं जो कि नेचुरली एटमॉस्फेयर के अंदर क्रिएट होते हैं। जब ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड एयर पोल्यूटर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में जाकर रिएक्ट करते हैं किसी और केमिकल या किसी और चीज के साथ, नेचुरल कंपोनेंट्स के साथ या इवन ह्यूमन मेड के साथ। अब ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स तमाम सारे दिए गए हैं। ये अगेन ह्यूमंस के पेंट वगैरह करने के डिफरेंट पेंट्स के अंदर डिफरेंट जो आपकी कंस्ट्रक्शन हैं, आपकी कार वगैरह और फैक्ट्रीज वगैरह और डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस या फॉरेस्ट फायर्स है, इन सब से बेसिकली ये सारे पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं। जो प्राइमरी हैं वो है सीओ और CO2, इसके अलावा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा SO2 जो कि सल्फर है, उसके अलावा NO, NO2 और मोस्ट हाइड्रोकार्बन और मोस्ट पार्टिकुलेट्स। अब ये जो है एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं पानी वगैरह के साथ और ये नए कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे HNO2, इसी तरह से SO3, इस तरह से HNO3, इस तरह से H2SO4 जो कि बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड है, H2O2, O3 ओजोन और पेंस, इस तरह से मोस्ट NOs एंड SO4s जो सॉल्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं इसकी वजह से।
या कि पार्टिकल्स जो डिफरेंट आ जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, इस तरह से डस्ट के पार्टिकल्स, लेड, सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका क्रिएट हो जाता है, जिससे एसिड रेन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर टॉक्सिकेंट्स, इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, इस तरह से, ठीक है, जैसे कि ये मीथेन है या बेंजीन है। और ओजोन, हैजर्डस एयर पोल्यूशन के अलावा और हो सकती है, ये ओजोन की वजह से डैमेज हो सकता है, डिफरेंट ओजोन ना होने की वजह से, टू डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। फिगर 8.8 के अंदर आप देख सकते हैं जो प्राइमरी सोर्सेज है, इसके अंदर सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारा एयर पोल्यूशन का, वो ट्रांसपोर्ट है, दैट इज 57%। वेयर एज फ्यूल कंबस्टन जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में होता है, दैट इज 21%, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर 12%, और मिसलिनियस डिफरेंट अदर सोर्सेज से 10%। अब स्टेशनरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ऐश है, सल्फर ऑक्साइड एंड हैजर्डस एयर पोल्यूशन, ये सारे रिलीज होते हैं फ्रॉम स्मोक स्टैक्स एट द कोल फायर्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन टेनेसी, जैसे कि उसकी एक सोर्स आपको दिखाई गई है। इस तरह से मोबाइल सोर्स जो है वो स्टेशनरी सोर्स थी, अब मोबाइल सोर्स के अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट के आपके व्हीकल्स हैं, डीजल और कार्स और ट्रक्स, ये सारा कुछ। तो डीजल ट्रक्स प्रोड्यूस पार्टिकुलेट मैटर एंड अदर काइंड्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन के, ठीक है एयर पोल्यूशन तो होती है, लेकिन इसका, इससे फर्क क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। एयर पोल्यूशन इंजर्स ऑर्गेनिजम्स, रिड्यूसेस visibility and attracts and corrodes materials such as metals, plastics, rubber and fabrics. Air pollution harms the respiratory tract of animals, including humans, and can worsen existing medical conditions such as chronic lung disease, pneumonia, and cardiovascular problems. Now, air pollution and human health. Generally speaking, exposure to low levels of pollutants leads to irritation of the eyes and inflammation of the respiratory tract. Many air pollutants also suppress the immune system, including susceptibility to infections. इस तरह से अर्बन एयर पोल्यूशन अगेन, ओके, जो कि अर्बन एरियाज में ज्यादा होती है। So air pollution in urban areas is often called smog. The term smog was coined at the beginning of the 20th century for the smoky fog prevalent in London because of combustion. Traditional London type smog, that is smoke pollution, is sometimes called industrial smog. The principal pollutants in industrial smog are sulfur oxides and particulate matter. The worst epidemic of industrial smog typically occurs during winter months when combustion of household fuels such as heating oil or coal is high. Because of air quality laws and pollution control devices, industrial smog is generally not a significant problem in highly developed countries today, but it can be severe in developing countries. Another important type of smog is photochemical smog, first noted in the Los Angeles in the 1940s. Photochemical smog is generally worst during the summer months. Both nitrogen and oxides and hydrocarbons are involved in this for its formation. The photochemical smog क्या है? Brownish orange haze formed by chemical reactions involving sunlight, nitrogen oxides, and hydrocarbons. अब ये हेल्थ इफेक्ट्स आ गए टेबल 8.1 के अंदर, स्वेयर मेजर एयर पोल्यूशन के जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं। पोल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर से इंडस्ट्री जो सोर्स है इसकी इंडस्ट्रीज है और मोटर व्हीकल्स है, इससे इफेक्ट क्या होता है? Aggravates respiratory illnesses, long term exposure may cause chronic conditions such as bronchitis. इसमें सल्फर ऑक्साइड जो कि पावर प्लांट से और इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं, इरिटेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सम इफेक्ट एज पार्टिकुलेट्स,
और कुछ पार्टिकुलेट के तौर पे भी इफेक्ट करते हैं। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो मेजर मोटर व्हीकल से, इंडस्ट्री से, हैवी फर्टिलाइजर से उससे रिलीज होते हैं, ये है इरिटेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एग्रीविएट रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एज एस्थमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और कार्बन मोनोऑक्साइड यूजुअली मोटर व्हीकल से और इंडस्ट्री से होती है, रिड्यूसेस ब्लड्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, causes headaches and fatigue at low levels, mental impairment और death at high levels। इसी तरह से ओजोन जो कि फॉर्म इन एटमॉस्फेयर, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है ये। It irritates the eyes, irritates respiratory tract, produces chest discomfort, aggravates respiratory conditions such as asthma and chronic bronchitis। Okay, now let's discuss how weather and topography affects air pollution. Changes in temperature throughout the day produce air circulation patterns that